come to the next. Now supply the tensor palatini. ये तो अभी देख लिया भाई. Sir, it is supplied by the mandible. Okay, sir. Come to the next. Yes, area marked in the given image is supplied by dermatome number. So what is the dermatome number? T8, T9, T10, T11. So can you see this level is at the umbilicus? Yes, umbilicus is round. Just add one stick. So this is the 10. Okay. So yes, T10 is the answer. Getting the point? Okay. Yes. What is the vertebral level? What is the our dermatome of the nipple? Sir, nipple. Just break the stick. Okay, and just put this another stick down. So yes, it is T4. Nipple, dermatome, T4. Yes, Dr. Abid. Got the point? Very good, very good. Now come to the next. Dermatome is very important. Which of the following are branches of the anterior division of the iliac artery? Yes, it is the repeated question PYQ from the your exam INICET. Okay, so this anterior division is supplying the pelvic viscera. So pelvic viscera, vesicle. Yes, bladder. So anterior division is supplying the vesicle. Yes, rectum is the our pelvic viscera structure. Inferior vesicle, it is again the viscera. Yes, vaginal artery, this also. But yes, superior gluteal, inferior gluteal, there is a confusion. Now, do you remember our abdominal aorta? It was dividing into the common iliac artery. Sir, it was dividing into the external iliac artery and internal iliac artery. External iliac artery is making the femoral artery, popliteal artery, so on, the blood supply of the lower limb. But yes, the internal iliac artery. This internal iliac artery is dividing into the anterior division and the posterior division. This anterior division is supplying our pelvic viscera. So pelvic viscera, what are the pelvic viscera? The bladder, and there is a rectum and anal canal. Tell me, it is male or female? Yes, it is male, na? It is male. Yes, if there is the uterus and the vagina, then it is female. Okay, तो इसमें अगर कोई इसमें मेल फीमेल पहचानने में कोई गड़बड़ नहीं करना. अगर तुम गड़बड़ करो तो अब भी जाओ बाथरूम में, वहां से पानी लो और उसमें कूद जाओ. Okay, yes, means what we have to see, sir, the pelvic viscera, they are supplied by the our anterior division. So there is our, yes, superior vesical artery, inferior vesical artery, they are branched from the anterior division. So uterine artery and the vaginal artery, these are the branch of the anterior division. So there is our superior rectal artery, middle rectal artery, inferior rectal artery. But the superior rectal artery is the branch from the inferior mesenteric artery. This middle rectal artery is a direct branch from the anterior division, and our inferior rectal artery is coming from the internal pudendal artery, which is a direct branch. Do you remember posterior division? So there was the formula: I love what? Sunny, Salmon, Sonakshi, whatever you want to do, you can do. I love Salmon. Okay. I for ilio lumbar, L for lateral sacral, and S for superior gluteal artery. Are you getting? Okay. Yes. What is the point? So you can see superior gluteal artery, sir. It is also the branch from the posterior division. So definitely this is the branch from the anterior division. I told you the two artery, inferior gluteal artery, and the another was the obturator artery. These are the branch from the anterior division. So you can see according to this, all are the branch from the anterior division except this superior gluteal. So answer is the 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Chalo. Next question number 23. Fibers from the mud structure and which of the following areas of the thalamus? So what are the structures? First look here. Sir, see. There is our septum pellucidum but not seen here. So the cavity is seen. Na? So this is the cavity, lateral ventricle. Na? Yes, if there is a partition, thin plate, then septum pellucidum you have to say. And there is our fornix. Then THP. This is our thalamus. Yes, you can see below the thalamus there is a hypothalamus, and this is a pituitary stalk. Here the pituitary gland will be attached. Our mnemonic is tum ho piyakkad. Okay, so this is the mnemonic, tum ho piyakkad. Thalamus, then hypothalamus, and there is a pituitary. And you can see our structures MPM, midbrain, pons, and then medulla. Can you see there is our, yes, canal. This is cerebral aqueduct of Sylvius. And the fourth ventricle, the small elevation, one another elevation, you can say superior colliculus, you can say the inferior colliculus, and this mass just above the superior colliculus, this is our what? Pineal gland. Done.
So they are doing the arrow below the hypothalamus, sir. This is the breast-like elevation. This is the mammillary body, sir. It is the breast-like elevation, mammillary body, making the floor of the hypothalamus, making the floor of this area. This is the third ventricle. Okay. Few additional knowledge. Can you see there is one thin opening? This is the interventricular foramen of what? Monroe. Not the point. So they are asking the question: fibers from the marked area. It is ending in which part of the thalamus? So can you tell me? This is nothing. This is our Papez circuit. So I told you the Papez circuit. चले Himachal Pradesh, and then you have to say for the Manali. Chale Himachal Pradesh, Manali, then again come back and again say the same thing. So this is the very poppy kind of the circuit. This is the Papez circuit. I told you this pathway, sir, in between the yes, A for this is the anterior nucleus of what? Thalamus. Chale, this is the our cingulate gyrus. ये सब देख चुके बेटा. हिमाचल प्रदेश means this is the our hippocampus, and this is the Manali, this is the mammillary body. So remember, in between the hippocampus and the mammillary body, sir, there is the our fornix. So this is the our what? Papez circuit. Okay, so answer is the anterior nucleus of thalamus. Okay, more things we discussed in our class, the importance of this all. Okay, but right now this is the our ENT session. Is it okay? Yes. Okay, Harshita. Now come to the next. 24-year-old null gravida Caucasian patient presents with the 15-month amenorrhea, bifrontal headache, photophobia, normal visual field, nulliparous cervix, bilateral cystic ovarian masses, for endocrine, elevated serum prolactin. So it is asking about the mouse. What is this? Elevated prolactin. What is this? Sir, elevated prolactin hormone. So it is leading to the galactoria. Sir, this is the amenorrhea. Yes, syndrome. So this is a GAS. Why the GS occurs? Due to the pituitary adenoma. Okay, the pituitary adenoma is there. So just tell me the pituitary gland is located where? Where the tumor? So this is the our cribriform plate of ethmoid. It is not related with our pituitary gland. So this B is the our Turkish saddle, Sella turcica. This is the location of the pituitary gland. Yes. So B is answer. C is the our second large foramen of the skull, jugular foramen. It is the foramina magna. So definitely the B is the answer. Agree? Clear? Yes, pituitary gland is the king. So on each side of the king, these are the queens. ओके और फिर बेटा राजा रानी को क्या कर रहा था? राजा रानी को रोज दे रहा था, रोज दे रहा था, रोज दे रहा था, नहीं बोला था हमने. सो व्हाट यू टू रिमेंबर सर, देयर इज द आवर फोरामेन रोटंडम हियर, then oval and then spinosum. Here is our rotundum, then oval and then spinosum. What is the point? Okay, yes. Why no visual field defect? Rajat. See here, question. Alpha, one patient is presenting with the mass in the right hypochondrium. Yes, and there is the all the features of the your weight loss, cachexia. What I want to tell you, one patient is coming to with the your problem in the liver function test are abnormal. There is the weight loss, cachexia, so on. For many options, all are saying about the cancer, and they are saying alpha fetoprotein is, yes, very less. Alpha fetoprotein is very less. What is your diagnosis? A, B, C. Controversial question D. Okay, all the features are about the our liver cancer, and we know the liver cancer is having the alpha fetoprotein. 75% cases raised. But nowadays they are giving the twisted question. They are giving alpha fetoprotein is not raised. Yes, alpha fetoprotein 75% raised. One question, one old question pattern of generation I'm telling you. But it means there are the 75% cases when the alpha fetoprotein are normal in liver cancer. So still the answer is the our yes, liver carcinoma, hepatocellular carcinoma. But what happens during the exam? They are twisting the question pattern.
hepatocellular carcinoma, yes. Cancer alpha fetoprotein is rest, but yes, 25% cases, 25% cases you will find the level is normal also, but तो क्या होता है बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? अब 75% में रेज होता है ना, एक्सक्लूड कर दो। लेकिन आंसर यही होता है ना, आंसर यही होता है। व्हाई? बिकॉज 25% अल्फा फीटोप्रोटीन्स आर नॉर्मल। ओके, यस, डिपेंड्स ऑन द साइज, माइक्रो और मैक्रो। इसी तरीके से बेटा वेगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस, 95% केसेस सी अंका positive, but they will give one question all the features of the granulomatosis and they will say the C anka is negative. What you have to remember? Yes, 5% cases of the venous granulomatosis, they are having the C anka negative, but still the diagnosis of the venous granulomatosis. Are you getting? They are giving the question pain, full vesicular eruption. Yes, ए लॉन्ग डर्माटोम, ये कुछ क्वेश्चन पैटर्न बेटा जो बहुत घुमाते हैं। यस, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? herpes, but remember there are the certain cases, yes, few cases are painless also, few cases are painless, very few cases, but still the diagnosis will be herpes. So get ready, get alert, focus, focus, focus. ओके, तो ऐसा हो सकता है बेटा, टिपिकल केसेस नहीं होते। इट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑल्सो, इट विल डिपेंड ऑन द स्टेजिंग ऑल्सो। ओके, तो यहां पर इसने एक चीज अलग कह दी, क्या सर? द न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर नॉर्मल। योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड ना, so that we are discussing over this point. Yes, Rajat, thank you beta, thank you for highlighting over this point. But all the other feature, majority of the feature, they are saying about the your galactoria amenorrhea syndrome ना। ओके, यस, ये चीटिंग है, वो चीटिंग करेंगे, वो तुमसे क्वेश्चन गलत करवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ओके, इसको पढ़ने में हमको पूरा 1 घंटे का टाइम लग गया, and at the end we created one beautiful mnemonic. Tell me beta, what is a beautiful mnemonic? I'm not going to teach you right now na, this is the END session. Sir, the concept is gusse be we gua ba gussa, and there is one more sassa. So these are the functional column of the nuclei from medial to the lateral side, from middle line to the lateral side. अरे वाह, डुग्गू is here. Yes, yes, yes. Duggu means Ritik Roshan is here. Very nice. So in our class, the Ritik Roshan is also very, very, very welcome to the Duggu. Okay, sir. So what we have to say? Gusse, be, gue, gua, ba, gussa, sasa. Do you remember गुस्से? General somatic efferent. Efferent. So there is the गुस्से में आंखें और जीभ दिखानी है. So what are the cranial nerve? Sir, 3, 4, 6, and the 12th nerve. Bay means branchial efferent. Branchial efferent means what was our trip mnemonic, sir? The pharyngeal arch nerve. So what are the pharyngeal arch nerve? V3, and then our facial, and then 9th, 10th, and 11th. So this common nucleus is the nucleus ambiguous. Okay. Then general visceral efferent. Do you remember the mnemonic? Left, SIDE, left side. Yes, L for lacrimatory nucleus, S for superior salivatory nucleus, I for inferior salivatory nucleus, D for dorsal nucleus of the vagus, and E for Edenzer-Westphal nucleus. Do you remember? Yes, this lacrimatory nucleus is causing the lacrimation. It is part of the facial nerve. Superior salivatory nucleus, yes, it is again the part of the facial nerve. Inferior salivatory nucleus is the glossopharyngeal nerve. Dorsal nucleus of the vagus, the 10th nerve. This is the third cranial nerve. So ultimately, the story that our parasympathetic cranial nerve, the 3, 7, 9, 10. So these are the our answer. These are the our answer. Is it okay? एक बार जल्दी से हम चीजों को याद कर रहे हैं। यस, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखो धड़ाधड़ कैसे आंसर याद आ रहा है। यस, ग्वा बा, ये दोनों कितने भले लोग थे। यस, दिस बोथ वी आर फ्यूजिंग टुगेदर. सो ओनली viscera in our body which are having the both general visceral efferent and the branchial efferent, these are the our nucleus tractus solitarius, NTS. N for 9, T for 10, S for 7. I know S for 6, but I told that this is the test pathway. That's why never include the 6. 6 is at the lateral rectus. Okay, very good. देखो क्या धड़ाधड़ आंसर कर रहे हो। लव यू ऑल बच्चों, क्या बढ़िया। देखो सब धड़ाधड़ आंसर कर रहे हो। बताओ भला,
क्या बात है यार, क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट बनाते हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। देखो धड़ा धड़, ये दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यू ऑल द स्टूडेंट्स आर, यू आर गिविंग द आंसर, डुम 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 डुम, यस, सो फायर ऑफ द आंसर। यस, देन जनरल सोमेटिक एफरेंट, सर दिस जनरल सोमेटिक एफरेंट इज द जनरल somites sensation. Okay, yes, general somatic afferent. Okay, so this is the fifth cranial nerve, the facial sensation, the sensory nerve. Getting the point? So remember beta, the mantu, cantu and santu, the fifth cranial nerve, sensory nucleus, and last special somatic afferent. Remember beta, if we are talking about the afferent fiber, then second, first, second and eighth. But if we are talking about the nucleus, then only the eighth cranial nerve is having the nucleus. Khatam, tata, bye bye, gaya. So they are asking special somatic afferent fiber. Fiber, na? They are asking about the fiber. So answer is special somatic afferent. It is having the first, second, and eight. First, second, and eight. First, second, and eight. First, second, and eight. Answer is the D. Mantu, Kantu, Santu. So beautiful answer by you all the guys. Very good, beta. Very good, everybody. चलो, जनरल सोमेटिक इफेक्ट ये बता दो भाई, ये तो एकदम आसान है। I have done a big mistake reading from other anatomy teacher. Very interesting class sir. थैंक यू मेटाबॉलिक भाई। लेकिन भाई देखो, आपने जिससे भी एनाटॉमी पढ़ी है बेटा, कोई भी टीचर है ना, हर टीचर बेस्ट होता है। किसी टीचर के बारे में ऐसा नहीं कहना बेटा, है ना। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का टीचर हो, क्योंकि कॉलेज के टीचर बेटा नहीं अच्छा पढ़ाते, ठीक है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनके कारण हमारे कॉलेजेस रन कर रहे हैं, उनके कारण कितने लोगों की भलाई होती है, ठीक है। हर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब तुम हमको कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन वाले सीट में बैठा दोगे, तो क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला पाऊंगा? क्या, बिल्कुल नहीं चला पाऊंगा बेटा, मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, है ना। तो चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे कॉलेज का टीचर हो, चाहे एनाटॉमी का कोई दूसरा टीचर हो, बेटा उसने भी मेहनत की, बस हुआ क्या कि ना ट्यूनिंग नहीं जम पाई, ट्यूनिंग नहीं जम पाई। भाई वो टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा क्योंकि उनकी ट्यूनिंग जम रही है। बेटा आपके और मेरी ट्यूनिंग जम गई तो मैं बेस्ट हो गया और आप मेरे लिए बेस्ट हो गए। ओके, तो बेटा टीचर होना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज होती है ना। सो सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ हो, लेकिन यस, एंजॉय, जस्ट एंजॉय द लाइफ, है ना। चलो, गुस्से में क्या करनी है? आंखें और जीभ दिखानी है। तो बेटा गुस्से में आंखें, आंखें मतलब क्या? 3 4 6। जीभ मतलब क्या? 12th। तो ये तो 7 बोल रहा है, ये नहीं है। सेकंड और थर्ड, फोर्थ नहीं सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नहीं हो सकता। यस, यहां पर आ रहा है, तो जनरल सोमेटिक इफेक्ट। याद आया क्या? हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। ओके, ओके, क्लियर बेटा? फाइन, यस सर। यस, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। हाँ बिल्कुल सही है, ऊपर से आती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक लैरिंग्स के अंदर जाती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व, दूसरी लैरिंग्स के बाहर रह जाती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ओके, गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ओके सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर इज डी। yes, a 19-year-old female consuming a vegetarian diet with tiredness, palpitations, on blood examination she had macrocytic RBC। अरे, ये हमारे हिमेटोलॉजी के क्वेश्चन पर कैसे आ गया? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, आंख बंद करके बोल दो ये क्या है। दिस इज द योर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मजा आ गया। Hyper segmented neutrophil, characteristic feature of the hyper. Okay, yes, also vegetarian diet, definitely this is the case of the B12 deficiency. Okay, got the point? Yes sir. Now in the above patient, degenerative feature will be seen in which part of the spinal cord? So this is leading to the, अभी तो देखा था ना, it is leading to the subacute combined degeneration. Yes sir, it is a subacute combined degeneration, and this subacute combined degeneration is mainly affected the dorsal column first and then other column. So let's see. Yes. They are giving the special stain, central canal. This is the butterfly. Where are you? This is the our butterfly. Yes. So this is the our dorsal horn. Sir, this is the our what? Ventral horn. Sir, this is our what you can say A. Sir, this is the our dorsal white column where the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus are located. Sir, we know very well on the lateral side there is a our presence of the lateral spinothalamic tract plus dorsal spinocerebellar tract plus ventral spinocerebellar tract is there.
and there is our front part here, anterior spinothalamic tract is present. So definitely in the our vitamin B12 deficiency, this is first affected. So answer is the A. Very good, very good. Yes, later it will involve the other also, na? Fine, but later. Okay, sir. Now identify the epithelium. So we are looking for this one, sir. There is the epithelium. We don't know. We don't know. We don't know. What is the question? What is the answer? Non-keratinized stratified cuboidal epithelium. Keratinized stratified cuboidal epithelium. Non-keratinized stratified squamous epithelium. Keratinized stratified squamous epithelium. So in this image, can you see the blue color? Blue color means nucleus. Yes, sir. These are our blue color. These are our nucleus. Can you see this brown color? What is this? These are the pigmentary structures. So definitely, this is the melanin. You know the melanin is found in skin. Yes, it is skin. Khatam, tata, bye bye, gaya. So skin is having the keratinized, stratified, squamous epithelium. Yes, skin slide is very important. Are you getting? Also, you can see here, no blue means no nucleus. No nucleus means no life. No life means this is the dead cell, and dead cell layer is known as the keratin. So this is the keratinized. So exclude this non-keratinized, exclude this non-keratinized. Multiple layer. So you will say stratified. Yes, stratified, and here is the stratified. Now either the cuboidal or the squamous. Okay. So just to see upper layer, the blue color, the nucleus, the blue color, they are parallel to the basement membrane, and we know very well. For your confirmation, skin is having the yes keratinized stratified squamous epithelium. The part yes सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर अभी तो छत है और रशिया में पंखा भी नहीं लगा है, लाइट लगा है. Okay, getting the point? Okay, but a hair is not here, so you can go for the thick, na? Okay, thin skin part, so there are the presence of the hair. So it is question, muscle used for the tendon grafting operation in lower limb. Yes, tell me. We don't know. See here, palmaris longus. Abe, palmaris longus. Palmaris longus, it is in the palm. Exclude. ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं आंसर नहीं हूं, मार्क मत कर. बट ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल, यस, वी आर इन द पैनिक सिचुएशन एंड वी आर मार्किंग दिस वन. Yes, semi-membranosus. Semi means half membrane. Why it is half? So exclude this one. Now see, semi-tendinosus. Yes, it is having the tendon. And now the plantaris. Suppose you are marking the semi-tendon. Suppose. Yes, you are wrong. You are wrong. क्या सर आपने तो बोला था 4 ऑप्शन, एक्सक्लूड द 2 वॉट एवर यू आर फीलिंग, मार्क एंड गो. बेटा याद रखना कि अगर मान लो आपने ये 2 ऑप्ट कर दिए, आपके पास 2 बचे और आपने गलती से इसको मार्क कर दिया, यस इट इज रॉन्ग, बट आई विल से यू वॉन द गेम. बेटा मैं बोलूंगा तुम मैच जीत गए, तुमने ये क्वेश्चन सही किया. हो सकता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम की नजर में हम कुछ क्वेश्चन गलत हो, लेकिन बेटा हमने जो गेम प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हम सही हैं. समझो बेटा, एक मैराथन मैच है. ओके, उसमें 1,000 लोग पार्टिसिपेट किए, रेस हो रही है. तो बेटा एक आदमी फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया. ओके, तो कौन जीता 1,000 लोगों में? सिर्फ 3 लोग. ओनली 3 आर विनर ना. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस 1,000 लोग में एक आदमी था जो बहुत मोटा था, कभी सो के उठता नहीं था. उसने एक चीज बोली, क्या? कि यार मैं रोज 12 बजे सो के उठता हूं, मैं इस मैराथन मैच में सुबह 7 बजे पहुंचूंगा, मैं दौड़ पाऊं या ना दौड़ पाऊं, लेकिन मैं पहुंचूंगा. वो सुबह 7 बजे उठा, वो दौड़ने पहुंच गया, 1 किलोमीटर दौड़ा, आगे नहीं दौड़ पाया. आप ये बताओ क्या उसने मैच जीता कि नहीं जीता? बेटा जीता. वो नहीं दौड़ पाया लेकिन वो जीता. उसने जो सोचा उसने किया. एक और आदमी था जिसने पहले मैराथन मैच में कंप्लीट नहीं कर पाया था. उसने सोचा था कि ये मैराथन मैच मैं कंप्लीट करूंगा, भले ही मैं मैच ना जीतूं लेकिन मैं मैराथन कंप्लीट करूंगा. वो पूरा दौड़ा, उसका रैंक लगा 1,000.
लेकिन वो जीता कि नहीं जीता बेटा? वो जीता ना। उसने जो टारगेट बनाया था कि भाई मुझे दौड़ना, वो जीता। एक और आदमी था जिसने सोचा था कि मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 10 में आना है। वो अंडर 3 नहीं आया, लेकिन बेटा वो टॉप 10 में आ गया। वो जीता कि नहीं जीता बेटा? वो भी जीता। ओके। व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, ये लाइफ है, ये जिंदगी है। हर बार हम नहीं जीतेंगे, हर बार हम नहीं सही रहेंगे, लेकिन हमने जो सोचा, हमने जो गेम प्लान बनाया, क्या हम उसमें सही हैं? तो बेटा ये जिंदगी है, ये लाइफ है। उठो, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है। बेटा बस हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नीट पीजी एग्जाम दिए जा रहे हैं, गधों की रेस में दौड़े जा रहे हैं। कल के डेट में हम डॉक्टर बनेंगे, पिटाई भी खाएंगे। आजकल पिटाई, लड़ाई झगड़ा होता है। बेटा ये सब चीज से ऊपर उठो, है ना। वी हैव टू मेक द वर्ल्ड फॉर बेटर टू लिव। ओके। तो हमको कुछ अच्छा करना है, हमको चीजों से बाहर उठनी है। तो बेटा अगर मान लो हमने इसको मार्क कर दिया, ओके, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमको अपना कोशिश करते रहना है। आई एम गोइंग टू टेल यू द फैक्ट। और हमने इसको 3D में भी देखा था। सी हियर बेटा, व्हाट आई वांट टू टेल यू, लुक हियर, यस 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 यस, सी हियर बेटा। सर, these are the different muscles of the lower limb. Yes, look here. Lal fool, Neela fool. Anatomy, beautiful. So this is a gastrocnemius muscle. Cut it. Sir, this is the one muscle. This muscle is having the short belly, long tendon. So I told you this muscle is having the very long tendon. That's why it is used for the your tendon grafting. Answer is a plantaris. Again, sir, this plantaris muscle is having the short belly and it is having the very long tendon. Yes. So this muscle is having the what? Short belly and very long tendon. That's why this muscle is the our tendon grafting operation muscle plantaris. Agree, beta? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे गलती हो गई, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा हुआ ना? यस नौरीन, तजुर्बा हुआ ना? ओके। यस, आई रिस्पेक्ट सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।